Okay. Good evening, sir. Good evening, everyone. Uh, my name is Vishwan, and I will be the host for today's event, My Life, My Story. It is a true pleasure and honor to come together today to extend a warm welcome to our three distinguished speakers. Our first speaker is Jyotija. Jyotija is an accomplished author, speaker, and a columnist. She has won the Times of India Right India Season 3. She also holds the position of president at Savit Savitribai Seva Foundation and also has authored notable books such as Anandi and Heart Sanctuary and other stories. Uh, Other speaker, uh, our next speaker is Nitish Raj. Nitish Raj is the co-founder of Literia Insight and also the editor-in-chief at Literia Mirror and Today Magazine. Mr. Raj has made a mark for himself in the field of literature, during which he portrayed multiple literary attributes in various capacities, such as acclaimed author, literary critic, opinion editor, and columnist for modern literature. Vaibhav Pandesar, our next speaker, is an entrepreneur and a world record holder. He is the CEO of TwinWin, a seasoned edtech firm. He is a spoken word artist, TEDx speaker, and also Josh Talk speaker. He has received a prestigious award, Atal Bihari Vajpayee Samman. His book, Sodh Sanjeevani, stands as the Amazon bestseller and is been even featured in the Fortune magazine. We are truly honored to have these three esteemed guests with us, ready to share their motivating life stories. A heartfelt welcome to our distinguished guests. Your presence here today is sure to inspire us all on our path to success. Now, our batch has discussed with us about the main question. Hello, am I audible? Yes, you're audible, Vishwanath. Yeah, Hi. yeah, okay. Yeah. Yeah. Hello, everyone. Ma'am, Jyotija, ma'am, my first question is for you. How do you describe your journey from being an HR to an unacclaimed author, ma'am? How can you, Thank you for that question. And first of all, good evening, everyone. And thank you for that wonderful introduction. It's quite an honor to be speaking to you all today. And especially with the co-panelists that we have today, it's quite an honor and a delight. And coming back to the question, my journey from being an HR professional to being a writer, I would say it has been quite a transformational journey, a journey that has been challenging with its own difficulties and successes and achievements. A process where there has been a lot of learning, unlearning, and relearning, and a process of self-discovery. And I would also like to add that being an HR professional today, when I go back and assess, I feel it was more like doing what is necessary to exist as a human being. And with my writing, I have learned to explore what lies beyond mere existence. So I would say it's quite an interesting journey, and there's so much to learn and explore and to grow as a human being every day, to evolve. So that's my journey. And there has been so much of ups and downs in between, and there have been so many phases and stages of life. And I'm sure you all must be agreeing, because currently you are studying and then you are looking forward to, joining a company and starting your own organization, entrepreneurs, and you will be professionals. So there are so many phases and stages you are yet to see, and you are already going through and learning so much. But every stage, I think before we learn, there's something we should unlearn, and there's some things we need to relearn. So that process of learning should go on, and that's the journey of life. Thank you. ma'am, I would like to ask this next question. Yes. What are the aspects of your successful life which one should heed attention and follow? See, what I individually believe, personally, I believe that for every individual as a person, meaning of life is different. Success, what is the definition of success? It is different for every individual.
So first we need to understand what we want from life, what does success mean to us, and how do we intend to build and create a success story around our life. So that is different for every individual. For me personally, being successful is being happy and contented in whatever phase of life I am, whatever stage I am in, whatever I'm doing at that point of time, whether I'm working, whether I'm taking care of my home, whether I'm traveling, or whether I'm writing, or whatever I'm learning something, learning new skills. So being happy and contented. And moreover, trying to find a purposeful life and create some meaningful goals in your life. Try to work on them and achieve them. And all the while, try to remain happy. That's my mantra of being successful in life. Because if you're not happy, you won't achieve, you won't give your best, you won't achieve your best. So be happy in whatever you do. You are studying today, so you need to be happy that, okay, this is the course I wanted to do. This is what I want to do ahead in life. And I'm trying to do my best. So happiness brings everything. Everything else works around happiness. So try to find happiness, and that's my success mantra. Thank you. Thank you, ma'am. For the next question, I would like to ask, like, how much of your, how much your own emotional support helps in shaping us during the professional setbacks? See, we are human beings because we have emotions, because that's what makes us human. And emotions can be both our weaknesses and strengths. So what we draw out of our emotions is completely up to us. And what I would like to say is, let your emotional strength guide you through thick and thin, whether it is your success, achievement, it is a setback. Because whether there is a setback, you need an emotional strength. Even when you are successful and you have achieved something in life, you need that emotional strength to guide you properly. So it is immensely important to have a strong emotional strength, because otherwise it's very difficult. You have to understand that whatever setback is there in life is there to build you up, to learn from every experience in life, and then move ahead. There's something better in store for you. And that is what I can say from my own experience, because every stage of life that I have lived, I have done so many things. I've been, I could say, jack of all trades, and of course, master of none, because I'm still learning and growing and evolving each day. So every stage I would think, what is this? Sometimes there are phases where you are always in a self-doubt. What is it? Why you are doing it? Where you are headed? What do you want to achieve in life? But then, as I said earlier, be happy and contented. Try to find meaning in life and find purpose in life, and what you are trying to do in that particular moment, where you want to go ahead. So keeping all these things intact, it will certainly help you, and it will build you up as a human being with a strong emotional support and strength, so that you keep on going on the right track and find out purpose in life and go ahead. So thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, would you like to share anything about your books, or like the award which you have won? I would like to, I'm being a writer, I would love to talk about my books. My books, I have written a book in Hindi and I have written 2 books in English. So my Hindi novella Anandi, as mentioned, it has been quite appreciated in both literary circuit and among the readers. There has been an adaptation as play. It has been adapted into a play. And there has been Anandi Natya Manchan in 3 places already as of today, and there are future plans as well with the book. The book is a story from the roots of our society, that is a village, a girl rising from that village, and how she struggles in her life and tries to achieve, despite everything coming from decades back. The story speaks of a girl's life when it was, I could say, 50s or 60s. So for the younger generation today, the story outlines like what the situation was for a girl to born, and how she was brought up in a rural setup,
of India in that time, and how things have changed today, and whether they have changed at all. So, and with her dedication to educate herself and become self-reliant, she goes on and struggles. So that is the story of Anandi from the roots of our society. And holding on to that root, those roots, I try to explore the entire world, the places that I have been, and because I've lived in UK and US for quite a decade. So from those places, I bring some beautiful destinations in my travel log, that is around the world through my lens. So where I explore and I let my readers explore some beautiful places that are there. And then there is my short story collection, Heart Sanctuary and Other Stories, that talks about human emotions. So every story is built around a particular dominant emotion, because at one particular point of time, there is not one emotion. There are several emotions that we go through. And of course, there is one sentiment that is dominant in one particular moment. So keeping that in mind, I have built 13 stories, and that is there in Heart Sanctuary and Other Stories. And it has been appreciated by Times of India and some major media houses as well. And with my writing, I have had the honor of being appreciated and awarded with several literary accolades. And for that, I'm quite grateful. So that's all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for sharing your valuable insights to us. Thank you. Moving forward with our next speaker, Nitish sir. Hello, Nitish sir. Okay. Hello, Vaibhav sir. Yes, I am pretty much here. Yeah. I think Nitish sir is like offline. No issues. Yeah. Yeah. Sir. So, sir, I would like to ask some questions for you. Definitely. How do you describe your journey as a multifaceted personality who has aced multiple roles with aplomb? Right. So when I start talking about my journey, it starts from Uttarakhand. And the best part is that you people are 1 hour away from me. So Yes. that's a coincidence, a great coincidence, I must say. So I started my journey from Haldwani, which is in Uttarakhand, you know that. And initially, when I started my journey, I was told that if you are from a smaller town, it creates few hindrances and at times you do not get opportunities. But I believe that the biggest gift that this generation has is opportunity. So I decided that I'll talk to best people from different walks of life. I would even from an IIM background. Still, I decided that, okay, I'll at least take guidance from people who have made it to these universities. I'll talk to people who are doing great as authors, as TV personalities. And as a result, I kept on meeting people. Rather, I met Jyoti ma'am in that journey as well, right? Because as an author, it is wonderful to talk to somebody who has done so much. So then in my journey, the biggest thing has been that if you keep on learning, you keep on getting great opportunities. Plus, whenever you are doing something, you have to ask yourself, what is next? So my parents have, rather my mother has taught me this, I'll be very honest, that whenever you achieve something, the very next day, you should think about what next. So I became the youngest author from the state of Uttarakhand in 2012. And I considered that, becoming a published author at the age of 2021, what was the age at that point of time? I thought that that would be the biggest achievement and I would be satisfied. But then very next morning, my mother asked, this has happened, what is next? So she told me that I told her that I'm happy, I'm an author. She said, you should be happy. But don't you think that you speak well? Why don't you try for TV? So I told her that's not possible. Sitting in Haldwani, how should I appear on news channels? Their offices are also not here. And I'm an entrepreneur, a full-time entrepreneur working from Uttarakhand. So it would even impact business. She said, no, that should not be the case. And you should talk and meet people. So I met people. I decided that I would go to Times of India's office in my city. I ran to them and then I asked them that I want to write for you. And they told me that you cannot have an interview like this. That's not possible. So I told them that if somebody who's in early 20s comes to you with a question, you must answer it. So the editor said that, okay, you speak for 1 minute. But after you have spoken for 1 minute, if we say no, you will go back and you will never discuss this again. I said, done. And my elevator pitch was handy and it was prepared. I think I spoke well. And as a result, I started writing for them.
From there on, similar thing I repeated in Noida, Film City, Noida. I went to news channels. They told me that this is not possible. You don't even live here. When there is a breaking news, how will you come? And I said, okay, you keep my profile. I'll keep on working on myself, and someday day will come and everything will happen. And then COVID happened, and all news channels started to work and ask people from different parts of the country who are experts of their fields, and they started inviting people. By then, my training on topics like interviews, profile building, career building had taken off. So I started getting these offers from Aaj Tak, CNN, CNBC, Republic. And because of COVID, I got the chance. So I remember that ad in which Mahendra Singh Dhoni came, and the ad was, "Log chote bade nahi hote, shehar chote bade ho sakte hain." And with that belief, I started my journey, and then TV happened, Josh happened, TED happened, and in the education sector also, I've trained around 1 lakh individuals. And then my mother again said, "What is next?" So in the course of our interaction, I'll tell you what is next and what is planned ahead. Thank you, sir. Coming to the next question, how do you see the juggling in various roles that strengthen you as an individual? See, it's very important that we understand that if we have to learn new things, we'll have to be among people from different age brackets as well. When I speak here at an IIM today, if ever I meet you, it would be a great learning experience for me as well. So you can't have that ek raja or kai praja wala jo attitude hai, that doesn't work these days. So it's very important to understand that you learn from people who are even 12 years of age, and you learn from people who are in their 80s. So juggling between roles is part of my life. If I have to speak, if I need the content to speak well, if I need content to train people, I should at least meet many people and understand what the real word is. So I really believe that the purpose of life is to lead a purposeful life. And after I meet people from different backgrounds, I met few spoken word artists few days back, about 6 months back. And then I thought, why not me? Why don't I come up with something in the field of spoken word poetry? And now I'm invited to all these good clubs. I go there, I write, and then I present these art pieces. And I'm loving that experience as well. It has got nothing to do with entrepreneurship. But really, has it got nothing to do with entrepreneurship? That's not the case. When I have to think of a new idea in the field of education, that might come from a spoken word piece as well. So juggling between roles might need time management. But when you follow basic principles of time, that when you devote good time to things which need great attention, and when you know that for self-growth, you will have to devote time. When work is a pleasure, life is a joy. So if you follow that principle, I don't think that time is a problem. To be very honest, when I was about to start my answers here, I just opened a page thinking that whether if you ask me, I'll narrate a spoken word poetry as well. Don't you think that when we meet at an IIM, if I speak apart from business, if I speak on these topics, don't you think that a younger audience will be delighted? So everything helps, and that's the mantra. So I would request everyone try out so many things. So I recently started counseling cricketers, and this is I shouldn't say this on record, but about 2 months back, I had a conversation with Rinku Singh, and now his name has appeared for the Indian cricket team. And I can proudly say that whenever my content comes up, he's the first one to share, or he's the first one to, like it on Instagram, to send a personal WhatsApp message. I consider this an achievement for a boy sitting in Haldwani. And still, I have told all news channels that I'm going to do it from here. So you can have your way, you can decide how you want to lead your life if you are ready to go to different people and to learn from them. I think that would be the biggest thing. Whether you can reach people, move out and ask them, "Mujhe bata dijiye kaise hota hai." So if I meet somebody from the E-Cell at IIM Kashipur, if I ask them, "How do you manage this? How do things function in IIM Kashipur?" I'll get great answers. Yes. So I think that is how it should be. Thank you, sir. The next question from my side is out of all the various professional achievements, which role do you cherish the most and why? I still cherish my role as a teacher as my favorite role. Though being on TV is very glamorous, whenever you do an episode for a top-notch channel, you get so many messages. You get that adrenaline hit when, your videos are viral. That thing happens still. But I had thought for myself that I would be changing or touching at least 1 million lives in my lifetime. I've reached around 1 lakh lives till date in 10, 11 years.
And through social media and through my different training programs, I would like to reach 10 lakh people. So I really believe that as a teacher, that's my favorite role, because that serves my national responsibility also. So when India reaches the south pole of moon today, at least I can sit and say even I have some contribution in the process, because I am also teaching the next generation of astronauts and people, and my role is also there in that. So teaching gives you that biggest thing, that I'm working, I'm getting paid for it, and in return I am involved in the process of nation building. So I really believe उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. I say this with my lines in Hindi. विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं. विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं. हमने अब ठान लिया है सोने की चिड़िया के पंख लौटाने हैं. If we move with that belief, no moon, no star, no sun is far away now. We are almost there. We are 40 minutes away from it. That's how it is. Yes, sir. Thank you for your view on that. I would also like to ask, like, you're also a world record holder, sir. Yeah. I would like you to share the experience, like how it feels to achieve that. Right. So this was for World Book of Records, and the best part was that their London edition was being written. So I had very good experts, including an MP from the British Parliament who was overseeing what I was doing. And when I achieved this, I got a letter from one of the MPs of British Parliament as well. The world record is about sharing benefits of government policies with people who need these policies. Let us suppose if there are bus drivers, let us suppose if there are didis who are working as house helps, how different policies of government can be used by them for their advantage without making it political. How different policies of whatever government comes, how we can share these things with the right people, that how they have to use subsidies, how they have to apply for different things. I campaigned for around 65 government policies on 8 different locations. And through this campaign, we touched around 12,000 people in a single day. So that was a unique idea, and it later converted into a record because Indian media extensively covered it, that how youngsters are training other people, that how they can reap benefits from different policies which are announced from time to time. And even I included school students from Uttarakhand and college students from Uttarakhand as well. So that made it a little more different, because topics of NEP were discussed. I'm an NEP expert as well, so I speak on TV on NEP, on different career related issues as well. So it became easier for me to attract that audience also. So I consider that that was the best part about that record that I made. Yes, sir. I would like to also ask about your company and the book which you have written, Soch and Yes. So the name of my organization is Twin Win. Twin Win, as the name suggests, believes that there are 2 aspects of our persona. One is the outer aspect. You become rich, you become successful, you get to a position, you get to a good college, you get to a good position. And then there is an inner aspect, whether you are confident or not, whether you have great relations with people around you or not, whether you are happy or not. When you win in both spheres of life, Twin Win happens. Victory in both spheres happens. And that is what life is. So with this belief, we started training students, right from school students to college students to different places. And today, through my organization and through my own personal brand, I go to IITs, I speak in different universities. I've even spoken at a United Nations forum. And then when you talk about my literary journey, I have written many books, 3 books rather, but my, that kind of a recognition was Soch Sanjeevani. It is a collection of motivational poetry. And since then, I have written 4 or 5 more books on similar themes, but I am again creating it as a record. So once I finish 11 books, I'll move to my publisher again, and I would like to do that as a record. So I got the kick from the fact that many youngsters who were in colleges, they started writing mails and sending messages that how, they read a poem and they felt that the language was so simple, but the message was deep. And it helped them coming out from some problem. So I think that became, a great source of motivation. Like, because I am sitting at an IIM, so I'll just narrate a small piece, and I hope that it fits in your life, right? This is just a simple piece. This is not ye poetry wala poem nahi hai. This is just 8 lines of this. Yes.
सफल होने के लिए घर की चौखट छोड़ी है तुमने, सफल होने के लिए घर की चौखट छोड़ी है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। माँ के हाथ का बना खाना छोड़ बाहर की रोटी चुनी है तुमने, दोस्तों की गली छोड़ अजनबियों की बस्ती चुनी है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। नई राह चुनी है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। औरों से अलग बनने का ठाना है तुमने, एक मौका खुद को और देने की सोची है तुमने, बमुश्किल बुरी आदतें छोड़ी हैं तुमने, टूटे दिल पर बरहम मरहम लगाने की कोशिश की है तुमने, तो थोड़ी परेशानी तो होगी ना। कल की बड़ी सफलता के लिए आज थोड़ी परेशानी तो होगी ना। So, with just with words, if you can reach people and if you can change lives, I think that gives a bigger satisfaction than coming on the Fortune magazine or the India Today magazine without full credit and full thanks to them that they decided to cover me. But I think these things matter more, frankly, to me at least. Thank you, sir. That was a very wonderful poem that links to our life in MBA here in Uttarakhand. Uh, Thank you so much. Coming to our next speaker, Nitish, sir. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Yes, sir. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Sir, I would like to ask a question about your journey. Like, how do you describe your journey from like a regular office-going guy to a leading popular literary magazine of the country, sir? So first of all, I would like to thanks the ECL of IIM Kasipur for inviting me. और जैसा कि आपने जो सवाल पूछा, मैं वैभव भाई की बात कर रहा कि शहर छोटे हो सकते हैं, शहर बड़े हो सकते हैं, एंड आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम स्मॉल टाउन। और ये कहीं ना कहीं वो रहता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो, आप अपनी पीजी करते हो, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जॉब, आप जॉब करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज होती है, बिकॉज वी आर सिटिंग आई एम, तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है वो आपके दिमाग में चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है। और यहाँ पे हम जो तीनों के तीनों बैठे, वी आर ऑथर्स। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात थी कि क्या इस फील्ड से, क्या इस सेक्टर में कुछ किया जा सकता है, ऑथरशिप में कुछ किया जा सकता है। एंड आई गॉट अ लकी ब्रेक। माई फर्स्ट इवेंट वॉज एट IIT रुड़की। जो मेरा पहला इवेंट था IIT रुड़की में था, तो कहीं ना कहीं वो एक था। एंड इवन टुडे, इवन बीइंग एन IIM, यू विल अंडरस्टैंड कि IIT की एक वैल्यू है, एक ब्रांड है। तो उसने मुझे एक जो पुशअप चाहिए थी, जो कैटलिस्ट चाहिए था कि नहीं, यू आर डूइंग समथिंग, तो वो एक पहला पुश वो मिला। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज की मैंने जो चीजें कर पाया, बहुत सारी चीजें मेरे प्रोफाइल्स में रहती हैं कई बारी कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या है उस सब्जेक्ट को लेके। अगर मैं कोई चीज करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैंने उस पर वर्कआउट करा है, क्या मैंने अपना होमवर्क करा है, या मैंने सिर्फ किसी को देखा कि यार वो इस फील्ड में अच्छा कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। जैसे भी हमने वैभव सर को सुना, तो इन्होंने बताया कि मैं टीवी पे भी आता हूँ, मैंने पोएट्रीज भी करी है, मैं टीचर भी हूँ, और बीइंग ऑन टीवी लुक्स ग्लैमरस। तो क्या मैं इन्हें देख के टीवी पे आने की इच्छा बना रहा हूँ, मन बना रहा हूँ, या मेरे अंदर वो कैपेसिटी है? तो ये सारी चीजें जो थी, उसी को शायद लगा के जो जर्नी रही, कॉन्फिडेंस और अपने क्राफ्ट पे मास्टरी, बस यही छोटा सा मंत्र था। थैंक यू सर। आपका अगला सवाल, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ डू यू फील हैव बीन इम्पोर्टेंट इन शेपिंग योर लाइफ? If I would talk about what aspects, the first aspect, self-confidence, the confidence which I carry, Sir. the confidence that can I do it, will I be able to do it in the way I want to? जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, विभा ने डिस्कस किया, शेयर किया कि टुडे वी आर सिटिंग इन अ टॉक विद IIM काशीपुर। और बड़ी मजे की बात है कि नॉर्मल आप एक ग्रेजुएट होते हो किसी कॉलेज से, तो IIM में एडमिशन इज वेरी टफ, ट्रस्ट में। और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा सारे बच्चों से, राइट? या आसान था एग्जाम की प्रिपरेशन करना? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू गाइस, was it easy for to get entry into IIMs, or was it tough? Everyone had to struggle. It was like a roller coaster ride. Sometimes, roller coaster ride. Yeah. So and one thing I would like to make this conversation interactive. ऐसा ना हो कि हम लोग ज्ञान दे रहे हैं और आपको भी जो पूछना है, apart from the host विश्वनाथ के अलावा, anyone can ask any question from any of the three speakers. तो सबसे बड़ी जो चीज थी कि क्या मैं उस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, और जो मैं कर रहा हूँ, am I doing differently, क्या मैं अलग कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रोट अ बुक,
There was a book I had also loved someone. My debut book was I had also loved someone. Even being a male, I chose the topic of gang rape. A lot of publishers rejected me कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो. Gang rape is a very very sensitive topic, and coming from a male, coming from a young guy, means today I'm 30 plus, and about that time I was even less than 25. एंड कि अब गैंग रेप ऐसी सब्जेक्ट है इंडिया में जिसपे कि आप एक लाइन भी इधर या उधर हो गई लिखते वक्त तो सॉरी टू से यू कैन गो इनटू प्रिजन, राइट. उतनी सेंसिटिव टॉपिक पे लिखने के लिए आपको बहुत ही अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी जो इंटेलेक्ट है उसको बहुत सही इस्तेमाल करना होगा. दूसरी चीज, आपने जो काम किया है क्या उसमें आप नयापन ला रहे हो. जैसे मुझे मेरा एग्जांपल याद आता है, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, तो मैं क्या देख रहा था, बच्चे बुक्स की रिव्यूज करते थे. अब रिव्यू का मैंने एक फंडा क्या देखा, लोग यही कर रहे हैं, 50,000 वर्ड्स के स्टैंडर्ड बुक मान लेते हैं. एम आई राइट? इतनी होती है नॉवेल्स. Yes, sir. Guys, as I said, I would need answers from you also. Right, sir. Yes, sir. तो उसमें क्या चल रहा है कि बुक की पेस कमजोर है, बुक की यहाँ स्पीड अच्छी है, बट ये ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, एंड यू इट शुड बी अ मस्ट रीड. ये तो मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू द इंडस्ट्री, फ्रॉम द लास्ट 10 years इनटू लिटरेचर, आई कैन से अब दुनिया का कोई भी राइटर अगर अपना ड्राफ्ट लिख के देगा तो देयर विल बी ग्रामेटिकल मिस्टेक. तो आपने नई बात क्या बताई. सो आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मुझे एक हमेशा एग्जांपल मैं कोट करता हूँ. I will. There was an author, Novoneil Chakrabarti. Okay, his book was, if I'm not wrong, there is the storyline goes like that. The protagonist is into a May December relationship. Okay, he's into one night stands and runs an NGO for the benefit of women. And I actually pointed out, मतलब how much it is laughable. कितने मजाक की बात है कि आप प्रोटोगनिस्ट को बता रहे हो कि नहीं, मैं अपने से 15 साल 20 साल छोटी लड़की डेट कर रहा हूं, मैं वन नाइट स्टैंड में भी बहुत विश्वास रखता हूं, और मैंने एक एनजीओ खोली हुई है बेनिफिट ऑफ वुमेन की. तो जो पॉइंट्स हैं, क्या आप उस चीज को, क्रक्स को निकाल पा रहे हैं जो स्टोरी के फ्लॉज हैं अपने रिव्यूज में, अपने क्रिटिसिज्म में. और मुझे वो वैलिडेशन तब लगा, मुझे लगा क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या अपने मन की दौड़े जा रहा हूँ. तो आई रिमेंबर देयर वाज अ बुक बाय शशि थरूर सर, व्हाई एम अ हिंदू. उस पर मैंने क्रिटिसिज्म करा, and Sasi Tharoor himself tweeted about me that this guy has doing something fabulous, something differently overstated. तो मुझे एक वैलिडेशन भी मिली कि अगर शशि थरूर सर से बड़ा तो ऐसा मानते कि इंग्लिश इंडिया में किसी को नहीं आती, राइट. कि अगर वो बोलने लगे तो लोग कहते भाई साहब इन्होंने टर्म ही एक है कि एक थरूरियन, कि उनके जो बोले इंग्लिश से समझ में आ जाए तो समझ लो बहुत कुछ है. वो एक चीज. दूसरी चीज, जब मैं लिटमैग मैंने फाउंड करा, जैसा कि है कि एडिटर इन चीफ हूं मैं लिटमैग का, तो लिटमैग में क्या चल रहा था कि आप या तो बहुत बड़े राइटर है तो आ रहे हैं, या तो प्रोसेस को इतना रेड टेपरिज्म किया हुआ था कि नए ऑथर्स आ ही नहीं पा रहे हैं. आज आप आए में बैठे हो, आपने कोई स्टोरी लिखी, अब इसके लिए अगर मैं ये कहूं कि सॉरी, मैगजीन में पब्लिश होने के लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, ये आपके मोटिवेशन को जिंदा रखेगा या खत्म कर देगा. इट वुड गेट लाइक बोरिंग. हमें ऐसा लगेगा कि कोई हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है. सो इट विल बी लाइक इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे. मतलब आई फाउंड कि यार इंडिया में लिटमैग की, यू टॉक अबाउट एनी लिटमैग एंड दे आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ कंटेंट. बहुत बड़े बड़े लिटमैग्स के जो एडिटर इन चीफ है वो बोलते हैं सर कंटेंट नहीं आ रहा, और जब हम कंटेंट भेज रहे हैं तो सर आप 6 महीने उसे साइड में रख दिया है कि सर वी आर रिव्यूइंग इट, वी विल स्टडी एंड वी विल गेट बैक टू यू. तो मैंने ये प्रोसेस स्मूथ करा, ये प्रोसेस बहुत स्मूथ करा कि नहीं, अगर आपके कंटेंट में दम है तो हम राइट नो अंडर अ वीक और 10 days के अंदर हम पब्लिश करेंगे, और नहीं होगा तो रिजेक्शन मेल करेंगे. द सेम थिंग अप्लाइड विद ऑथरशिप. ऑथरशिप के साथ क्या थी कि हम देख रहे हैं बहुत से लोग जो है, एक कहीं ना कहीं मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जो बड़े ऑथर्स उनका एक अलग लेवल है, और जो सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स हैं वो अलग ही चल रहे हैं. मतलब देयर इज अ ब्रिज कि एक साइड वो है और एक साइड हम है, तो ये गैप जो है वो कैसे खत्म होगा. सो आई ट्राई टू फिल दैट गैप कि नहीं, सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स में भी सेल्फ पब्लिश्ड कंटेंट जो है काफी अच्छे राइट्स. आज ज्योति मैम है, वैभव भाई है, दे आर नॉट पब्लिश फ्रॉम अ वेरी बिग पब्लिशिंग हाउस, बट आई कैन वॉच कि आप किसी भी बड़े पब्लिशर से आप के ऑथर्स को उठा लें एंड मेक हर कम्पीट और मेक हिम कम्पीट.
आई कैन गारंटी दैट दे विल बी विक्टोरियस। तो ये चीज थी कि हमने कंटेंट को बहुत ज्यादा स्मूथ करा कि नहीं, अगर आपके पास राइटिंग स्किल है तो वी आर रेडी टू गिव यू प्लेटफॉर्म्स, वी आर रेडी टू गिव यू दैट लिवरेज, वो चीजें। और ये सारी चीजें थी कि आप, सीधी सी बात है, जैसे बिजनेस में एक चीज सिखाई जाती है एंटरप्रेन्योरशिप में कि फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा एक फंडा है, मंत्रा है कि सॉल्यूशन आप ढूंढो। आप प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन आप किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो मैंने मार्केट की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करे ऑन अ प्रोफेशनल नोट, ऑन एन इंडिविजुअल नोट। नाउ कमिंग टू माय इंडिविजुअल नोट, बहुत आसान होता है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस हार जाओ। आप कहीं मीटिंग में बैठे हो, आपसे बड़े स्पीकर हैं, आपसे बड़े लोग हैं, अरे ये कल का बच्चा क्या करेगा, कंसिडरिंग योर यंग एज, आई एम यूजिंग दिस लाइन। या आपने यार ये ही इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो बहुत सारी चीज। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खत्म करने देना, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खत्म करने देना। दूसरी चीज फिर से मैं बोलूंगा, जिस भी क्राफ्ट को उठाएं उस पे इतनी मास्टरी हो, इतनी मास्टरी हो, यू कैन से कि कोई भी आ जाए, आई कैन हैव अ कॉम्पिटिशन विथ हिम। तो ये सबसे जरूरी चीज, मेरी ये दो चीजें बहुत जरूरी थी। Thank you, sir. I would like to ask another question. Uh, how much it is important for you to understand your own psyche while venturing into a relatively unknown sector? ऑफ कोर्स सबसे बड़ी खेल तो आपके दिमाग का ही है। जैसे एक बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं कि पहले ताजमहल जो है किसी के दिमाग में बना, उसके बाद वो जमी पे बना। किसी को आइडिया आया होगा ना, ऐसा नहीं था कि शाहजहां जो है, मतलब मुमताज, एम आई राइट, उनकी वाइफ मुमताज ही थी, Yes. कि उनसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला राजा पैदा नहीं हुआ, उनसे ज्यादा खूबसूरत रानी पैदा नहीं हुई, ऐसा तो नहीं होगा। कहते हैं बहुत सारी रानियां ऐसी खूबसूरत थी कि मतलब, याद है मुझे एक कहावत है कि किसी रानी ने कहा था कि जितने मेरे पैरों की तलवों की खूबसूरती उतनी तेरी चेहरे की खूबसूरती नहीं है। मैं नाम भूल रहा हूँ, हिस्ट्री से है। तो ऐसा नहीं था, लेकिन शाहजहां ने ये सोचा पहले कि नहीं, मैं ऐसा बनाऊंगा जैसा दुनिया में बना ही नहीं होगा, जैसा दुनिया में बना ही नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। रीजन कि हमें अपने आप पे ही डाउट होता है। अभी जैसे बचपन का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में आप भी रहे हो, फर्स्ट एक कॉलेज पार करके आप आए हो, आईएम में हो, तो ठीक है। अगर स्कूल में क्या होता था, किसी ने पूछ लिया ना कि अच्छा इस बार के एग्जाम में टॉप कौन करेगा, गिन के 2 बच्चे या 5 बच्चे हाथ उठाते थे 60-70 बच्चों की क्लास में। क्यों? आई क्योंकि वुड उन नीड आंसर लोग फ्रॉम यू don't गाइस। have you don't have the confidence in that. कॉन्फिडेंस से ज्यादा था फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग क्या सोचेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या कहेंगे लोग, है सबसे बड़ा रोग। मतलब पढ़ाई टीचर वही पढ़ा रहा है, हमारे घर वालों ने भी हमारी ट्यूशन लगा रखी है, घर वाले हमें खाना भी अच्छा ही दे रहे हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटे जब कभी मैं टॉप नहीं करता था, एंड आई बिन हमेशा टॉप किया, 10 साल स्कूल करा लगातार टॉप किया, शायद कभी एक आध बार ऐसा आया तो मैं टॉप नहीं कर पाया। पापा कहते एक बात बताओ, खाना मैं भी वही दे रहा हूँ जो बाकी के बच्चे खा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स खिला रहे हैं, ट्यूशन मैंने भी लगवा रखी, स्कूल में सेम टीचर पढ़ा रहे हो, तुम टॉप क्यों नहीं कर रहे? चलिए वो तो उनका एक अपना प्यार था और अपना डांटने का तरीका था, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। ठीक है हम टॉप करें ना करें, लेकिन इतनी हिम्मत भी ना हो कि टीचर के सामने ये कहे कि हम टॉप करें। अरे ये तो ज्यादती हो गई। अभी जब आप कॉलेज में होंगे, बहुत सारे बच्चे आईआईटी से भी आए होंगे आईएम में, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल कॉलेज से भी होंगे, जो जिनका आईआईटी वगैरह में नहीं हो पाया, या आर्ट स्ट्रीम से होंगे, ह्यूमैनिटीज से होंगे, या मेडिकल से होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे आईएम काशीपुर में, राइट। जब उन्होंने कहा होगा ना अपने कॉलेज में कि यार कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं निकली इस बार, लेकिन आईएम तो मैं पक्का जाऊंगा, लोगों ने बड़े मजे लिए होंगे, बहुत ज्यादा मजे लिए, ट्रस्ट मी। शायद एग्री करें आप ऑन रिकॉर्ड या ना करें, लेकिन ट्रस्ट में एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो दिक्कत क्या हुई, हमने पहली बार ट्राई करा, हमने पहली बार ट्राई करा, ठीक है, लक, लेबर, चांस, देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। आप बहुत मेहनत कर लो, हो सकता है कि इस टाइम पे भगवान नहीं चाहता, देयर इज अ सुप्रीम पावर विच एवरीवन वुड एग्री, देयर इज अ सुप्रीम पावर, शायद वो नहीं चाहता आपको कि अभी उस जगह पे पहुंचो, तो शायद आप नहीं आ पाए, लेकिन इस बार आ गए। तो वो चीज जो है ना, सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हमने जो सोचा है, क्या मैं उसके काबिल अपने मन के अंदर से हूं, अंदर से हूं मैं काबिल। अगर मैंने किसी दिन सोचा था कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या फोर्थ ईयर में भी, कि यार मुझे आईएम जाना है, ठीक है इस बार नहीं कर पाया, थोड़ी नई नई उम्र थी, थोड़े कुछ गलतियां हमने कर ली, लेकिन वो गलतियां दोहराऊंगा नहीं, आईएम जाऊंगा, हमारा कितने लोगों ने साथ दिया था बताएं। मुझे 4 बच्चे स्क्रीन पर डायरेक्ट दिख रहे हैं अभी, चारों से आंसर मैं चाहूंगा। आई थिंक एमबी, तृप्ति, देयर इज वन, रवि, संजना,
मैं आप चारों से पूछूंगा, विश्वनाथ तो इस तरह है। स्टार्टिंग में ऐसा जब मैंने बोला कि मुझे आईआईएम करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो स्टार्टिंग में पहले लोगों ने बोला आर यू श्योर, बिकॉज अभी तक का जो तुम्हारा पाथ है, कैन यू डू दैट। तो मैंने फिर बोला कि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे एक बार ट्राई करना है, मुझे बैकआउट नहीं करना। सो आई ट्राइड एंड आई एम हियर राइट नाउ। ये है संजना, आर यू ऑडिबल? ओके रवि, सो आपका क्या था? आपने जब पहली बार बोला कि मुझे आईएम जाना है, कॉलेज में ही सोचा होगा, 12th में तो सोचा नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर हो सकता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ऐसे ही कैट दिया था सर, मैंने उतनी तैयारी नहीं करी थी। आई अच्छा, वेंट टू आई वेंट टू अ वेडिंग इन देहरादून and I had just filled up the form. I just appeared in CAT. So आई थिंक यू आर अ ट्रू जीनियस। कि इतनी टफ एग्जाम को अगर आपने ऐवे ही निकाला तो सच में जीनियस हो। फिर तो यू शुड यू नो well, अंडरस्टैंड योर पावर। so earlier I had, I mean, appeared in other examinations. So ओके, my aptitude and English was okay, okay. So that's why I managed to get it. ओके। My question is from Jyoti Jha ma'am. That ma'am, how tough was it to break gender stereotypes while authoring? Because it's too tough for female authors to shine like you have shown. First of all, thank you so much for that huge compliment. Shine like you. It really feels good because, as Nitish ji was saying a while ago, that for there are two different worlds where there are successful authors, the renowned ones, and then there are the ones who want to do something and they write and they want to make a name for themselves. And although the gap is being bridged, and we feel like celebrity already, and with such wonderful opportunities to interact with brilliant minds like you, it really feels that it is all very fulfilling. So coming back to the question, I would say when I was a student, I was a medical aspirant, and but I'm sure even if I was trying to prepare for IITs, I wouldn't have been able to clear it. And but of course, life had different plans for me. I was, as I said, medical aspirant. I cleared my CBSE, but the rank was less. So I got agriculture, and then I decided to study microbiology. And then I went on to appear for MBA, and I couldn't clear CAT. So, but with so many years down the line today with my writing, if I have been able to be a speaker at several IITs, I have been a judge at Kashi Yatra, IIT and I have been at IIM Lucknow. Today I'm here at IIM Kashipur. So I think with writing, maybe I was meant to do that all along. And what I achieved, what I was meant to do, with that, I'm able to live everything else, and everything else is falling in place. So this is what writing has made me achieve, and I feel really blessed and happy. That's so inspiring, ma'am. Thank you. नीतीश सर। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था कि हम में से बहुत लोगों का किसी ने मजाक भी उड़ाया होगा कि अच्छा आईएम हम जाएंगे और हम आज यहाँ हैं। और दूसरी एक बड़ी जरूरी बात, हमेशा हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट, ये तो ये पॉजिटिव थॉट्स, लेकिन एक बड़ी अच्छी सी कोट है, पॉजिटिव थॉट्स नेवर ब्रिंग रिजल्ट्स, पॉजिटिव एक्शंस डज। हमने सोच लिया कि आई एम जाना, ही बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है या हमने माइंड मेकअप कर लिया। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या उसके लिए मेरी जेन्युइन प्रिपरेशन है या हवा में ही बातें करूं। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि कई बार नए उम्र में जब वैभव भाई टीचर है तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा, ये एक वर्ड होता है कि बहुत ज्यादा वो दे आर इनटू थिन एयर, की उन्हें पता नहीं है, बस ये करना है वो करना है, 50 चीजें करनी है, लेकिन करना कैसे है ये नहीं पता है। लेकिन हम जब कॉलेज में आ चुके हैं, लाइफ के थोड़े साल हमने जी लिए, तो हमें ये पता है कि हमें अगर कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब हमने ये सोच लिया कि राइटिंग करनी है, और आई वॉज अ हार्डकोर मैनेजमेंट ग्रेजुएट, बीबीए करी, एमबीए कर रहा था, उसके पहले क्या मैंने स्टडी करा है, कितनी पढ़ाई करी है, कितने पन्ने लिख लिख के फाड़े हैं। हर ऑथर ये बोलेगा कि उन्होंने लिखे और फाड़े बहुत पेपर्स हैं, आपने कितना करा है, वो जरूरी चीज है।
ये सबसे जरूरी चीज यही है कि हमने उसके पीछे अपना होमवर्क कितना करा है। आपका होमवर्क जितना स्ट्रांग होगा, वैभव भाई क्रिकेटर्स को जो है ट्रेन करते हैं, क्रिकेटर्स अक्सर ये बताएंगे और बताते होंगे, जो मैं अज्यूम करता हूँ काफी इंटरव्यूज और क्रिकेट का फैन होने के नाते, कि एक शॉट जो हमें लगता है ना वो क्या शॉट है, सीधा बाउंड्री के बाहर गया है, स्टेडियम के बाहर गया है, उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है। 7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र से, जब हमें ना पता नहीं होता कुछ, कि जीवन छोड़ो, जीवन का मतलब नहीं बोला होता, उस टाइम से वो हर दिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई गेंदबाज है कोई बल्लेबाज है, तब जाके वो कहीं जाके इंटरनेशनल एरिना में एक शॉट खेल पाता है। उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद जो अगला गेंदबाज है या अगला जो बल्लेबाज है उसको सॉर्ट आउट कर लेगा। कम होता है क्रिकेट में, सॉर्ट आउट कर लेगा तो अगली मेरी 4-5 पारियां खराब होंगी और मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। तो मेरी कंसिस्टेंसी कितनी है अपनी मेहनत के पीछे, सबसे जरूरी चीज, कि मैंने जो क्राफ्ट चुना। आज बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा, बहुत अच्छे पैकेजेस पे जाऊंगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी आई एम काशीपुर में जिन्होंने कहा नहीं, एक बार एमबीए यहां से कर लिया फिर मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो उसके पीछे क्या मैंने काम किया है अपने बिजनेस को, क्या मैंने, या 50 स्टार्टअप के फाउंडर्स को सुना कि नहीं स्टार्टअप इज वेरी गुड चॉइस, व्हाई शुड वी वर्क फॉर दिस, लेट बी आवरसेल्फ किंग, ट्रस्ट मी इट्स नॉट एज इजी एज इट सीम्स। स्टार्टअप इतना आसान नहीं होता, बिजनेस इतना आसान नहीं होता, और हम बिजनेस के सबसे प्रीमियर स्कूल में बैठे हैं, प्रीमियर बी स्कूल में बैठे, राइट, आई एम काशीपुर। तो Yes. क्या हमारी कंसिस्टेंसी है, सीखने की ललक है, या एक फेलियर हो गया, एक फेलियर हो गया तो मैं परेशान हो गया। मेरे अंडरग्रेड्स में एक फैकल्टी हुआ करते, तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक लाइन बोली थी, इंसान वो नहीं होता जो 7 बार गिरे और 7 बार उठे, इंसान वो है जो 8वीं बार गिरने के बाद 9वीं बार उठने की हिम्मत रखे। और ये बिजनेस में भी अप्लाई होता है, लाइफ में भी अप्लाई होता है, राइट, कि लाइफ में हम लोग जो कर रहे हैं फेल होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। तो क्या मैं उसी साइक, आपने बात करी थी साइक की, सर आपका साइक क्या रहता है? हम लोग ऑथर से मिलते हैं, कई ऑथर से मिलते हैं, दे आर, लगता है बस इनके साथ काम करना, जीवन भर काम करना है। कुछ ऐसे मिलते हैं जो उन्हें लगता है सर आप ही क्या कर रहे हो, अपने को ही डाउट आ जाए कि क्या हम काम सही कर रहे हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें जिंदगी में, मिलते हैं नहीं मिलते हैं? अरे आप आईएम काशीपुर से कर रहे हो, इससे अच्छा तो फॉरेन से बी स्कूल से कर लिया होता, वो ज्यादा बेहतर होता, आईएम की तो अब उतनी ये रही नहीं। ऐसे भी लोग मिले होंगे जवाब देने वाले। तो क्या, एक से कहते हैं मैनेजमेंट में लाइन होती है, आइदर आई एम सेलिंग अ यस टू देम और आइदर दे आर सेलिंग अ नो टू मी, राइट। पढ़ाया गया होगा शायद, या कॉलेज में पढ़ाया गया होगा कि क्या उससे मैं अपनी पॉजिटिविटी दे पा रहा हूं या उससे मैं नेगेटिविटी खुद ही ले रहा हूं। ये लाइफ में बहुत जरूरी चीज है, किसी भी फील्ड में, वेदर यू आर एन ऑथर, जैसे अभी मैम ने कहा कि एक जेन्युइन ये है, एक कैटेगरी है जो रिनॉन्ड ऑथर्स है, और एक ऐसी कैटेगरी है जो हम रिनॉन्ड बनना चाहते हैं। कई बार आप बहुत बड़े ऑथर से मिल लो, कहेंगे नहीं ज्योति जी आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, मेरी ब्लेसिंग साथ में है, मेरा सपोर्ट साथ में है। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे, ज्योति जी लिख ही क्या रही हैं आप, छोड़ ही दो, लिखना ही छोड़ दो, राइट ज्योति मैम, एम आई राइट और एम आई राइट? Very, very true, sir. Very है true. ना? तो Yes, जब yes. कोई ये बोल रहा है कि ज्योति जी आप लिखना ही छोड़ दो, तो क्या ज्योति मैम उस टाइम लिखना छोड़ देने की इच्छा आ रही है अंदर से, या उसको ये करें ठीक है तुम्हें जो बोलना था वो बोल लिया, अब मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगा, राइट। जैसा बाबा भाई ने एक बात बड़ी अच्छी सिखाई कि जब मैं पहली बार गया टीवी वालों के पास, उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं होता, मैं बहुत से ज्यादा ज्यादा तुम्हें 1 मिनट दूंगा। इनके पास 2 ऑप्शन थे, यार 10 मिनट में तो मेरा गला ही खुलता है, हम स्पीकर हैं, 10 मिनट के नीचे तुम्हारा गला भी ना खुले, 1 मिनट में क्या ही बोलूंगा। लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, ग्रैब किया कि नहीं मेरे पास यही 1 मिनट है, या तो बादशाह अंदर या बादशाह बाहर। आज बादशाह अंदर है तो हम जैसा जानते हैं कि बाबा भाई बहुत सारे टीवी चैनलों पे आते हैं, और इतने पे आते हैं कई बार तुम्हें अगर नाम लेना शुरू करो तो मैं ही फंबल मार जाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ भाई कोई आप ही बता दिया करो, ठीक है। तो वही चीज है, हमने अपनी अपॉर्चुनिटी, लाइफ में कोई ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी जो है थाली में सजा के देने वाला, चाहे आईएम से हो, चाहे किसी भी बड़े स्कूल से हो, बड़े कॉर्पोरेट से एसोसिएटेड हो, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। जो मेरा साइक रहा है और जो मेरा एक आंसर यही होगा, अपनी अपॉर्चुनिटी आप खुद क्रिएट करें। क्योंकि 25-26 साल मैं एक उम्र मानता हूं एमबीए करने वालों की, ऑलमोस्ट 25 के आसपास, उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी ला के देगा, तो ट्रस्ट में वी नीड टू ग्रो। Thank you, sir. Thank you for sharing your wonderful experience and motivating us on that. Uh,
as we bring this insightful session to a close, I would also like ask anyone if there are any questions to be asked for the speakers. Feel free to ask, please. That would be great. Good evening, all of you. So I have a question for Vaibhav, sir. Sir, so you said in your experience, like you are in teaching background. So, like, what do you see the major challenges in India in the teaching background? If I want to say specifically the primary education in rural Indias, Right. what is your perception about that? So I think the biggest problem is that when you talk about rural India, the biggest problem is that when new age things are needed, whether we'll be able to give them an equal opportunity or not. राइट सो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, चाणक्य ने कहा था रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभते निर्गंधा इव किंशुका, विच मीन्स आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत बड़े घर से हो सकते हैं, लेकिन आप में अगर स्किल सेट नहीं है तो आप किंशुक के फूल जैसे हैं. इट्स अ फ्लावर विच हैज नो स्मेल. तो कौन एक ऐसे फूल को खरीदे जिसमें स्मेल ना हो. सो ये बहुत जरूरी है कि क्या हम इक्वल स्किल सेट दे पाएंगे. लाइक व्हेन आई एम गिविंग अ स्पीच इन अ बी स्कूल, या फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे या टीवी पे इसको कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप की. आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू कैन चेंज लाइव्स यू विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ये बात वहां कौन बताएगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत छोटे जगहों पे जाके कौन वो लोग होंगे जो वहां जाके काम करेंगे. अच्छी बात यह है देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश से आते हैं या आईएम से पढ़ते हैं और उसके बाद वहां के लिए काम करते हैं. राइट, यू नो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. तो देयर इज अ चेंज, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस. सेकंड बिगेस्ट चैलेंज विच इज इन सिटीज, जो आपकी जनरेशन फील करने वाली है अपने बच्चों के साथ, वो ये कि हमने स्कूल्स की और टीचर्स की अथॉरिटी को ब्रेक कर दिया है. अब पहले ना बच्चे हुआ करते थे लोगों के, अब लोगों के खिलौने होते हैं और उनका एक एक दो दो खिलौने होते हैं और उस खिलौने को कुछ हो जाए तो वो लड़ाई करते हैं, खिलौना टूट जाता है क्योंकि. सो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि जो टीचर है उसकी अथॉरिटी ब्रेक करते समय हम ये भूल जाते हैं कि जब यही अथॉरिटी देश की ब्रेक करेगा तो क्रिमिनल कहलाएगा. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इफ आई डू नॉट वियर अ हेलमेट, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई नो नियम तो तोड़े जा सकते हैं. प्रॉब्लम क्या है, नियम तोड़े जा सकते हैं कि शुरुआत कहां से हुई. जब पेपर में बड़ा बड़ा छपा आया कि स्कूल और कॉलेज ने बहुत फीस ले लिया, ये डिस्कशन होना चाहिए था पेरेंट और स्कूल के बीच, पेरेंट और कॉलेज के बीच, लेकिन ये हुआ अखबार में. अखबार में हुआ, फिर ये बातें बच्चे ने घर पे सुनी कि ये लोग मुझे लूटते हैं, दुकान हो गए हैं, ये सब टर्म्स चलने लगे. फिर बच्चे ने वो क्लाइंट वाला रिलेशनशिप बना लिया. अब बच्चा बन गया क्लाइंट और टीचर बन गए सर्विस प्रोवाइडर. तो वो तो बचा ही नहीं जो एजुकेशन में रह सकता था. तो आई थिंक दैट विल बी अवर बिगेस्ट चैलेंज कि हम अपने रूट्स को पहचाने. इंडियन सिस्टम गुरुकुल सिस्टम पे चलता है कि द टीचर इज ग्रेट, टीचर ने पढ़ाया आप उसको फॉलो करिए, इवन इफ द टीचर नोज अ लिटिल लेस. क्या हम टीचर से एक मॉरल एंगल सीख सकते हैं. इंदिरा नूई ने कहा था कि इफ द मॉरल कंपस इज पॉइंटिंग नॉर्थ, सब सही है. तो अगर आपको अपने कौन से टीचर याद हैं, वो वाले सर याद हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, या वो वाले सर याद हैं जो कोई लाइफ लेसन दे के जाते थे. आपको वो वाले याद हैं जो लाइफ लेसन दे के जाते थे. तो लाइफ लेसन वाले टीचर तो अब क्लास में लाइफ लेसन देते नहीं है, उनको तो डर लगता है कि पीटीएम में बहस होगी. सो दिस इज वेरी सैडनिंग एक्चुअली, एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि स्किल डेवलपमेंट को छोटी जगहों पे कैसे पहुंचाएंगे, और दूसरा जो अथॉरिटी है ऑफ अ स्कूल ऑफ अ यूनिवर्सिटी वो कैसे वापस लाएंगे. ये दो चैलेंजेस हैं जो सबसे बड़े हैं. दैट्स द थिंग. Thank you, sir. Somebody else is raising hand. Yes, maybe the host can unmute them. Yeah. Tushar, please go ahead. Hello, sir. A warm welcome from I am Kashipur. Actually, my question is from Nitish, sir. Sir, just as you mentioned that the people face fear and they have a high risk for changing their career or doing something that is different from what they are doing right now. So, sir, how did you overcome that? How did you overcome that fear that you were talking about, that like when we are giving the cat and when you are going to be changing your career as from from commerce side to being an author. So ओके मैं इसको इस तरह से बताऊंगा कि आपने पूछा कि सर आपने कैसे ओवरकम किया. तो सबसे बड़ी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि फियर ऑफ रिजेक्शन वाली बात. आई वाज इनटू एमबीए सेकंड ईयर, मैं अपना थर्ड सेमेस्टर दे रहा था और मुझे लगा कि नहीं, अब मैं राइटिंग को परस्यू कर सकता हूं. आई जस्ट ड्रॉप आउट. पहला. दूसरा, उसके बाद मैंने एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया
और जब वहां से मतलब छोड़ दिया मैंने, तो अगेन आई ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बातें बहुत कम बताता हूँ क्योंकि मेरा एक मानना है कि बहुत नाच करता है नाकामियों पे अपनी, उसने अभी मेरी नाकामियां देखी कहाँ है। अक्सर हम लोग स्टेज पे ना बहुत सारे स्पीकर्स को सुनता हूँ तो कहेंगे सर हमने ये किया वो किया ये किया वो किया, इसलिए यहाँ है। और मैं अक्सर अपनी लाइफ स्टोरी बहुत कम रखता हूँ कि नहीं हाँ एक जो है ये मेरा, लेकिन चूंकि आज यही बात ही हो रही माई लाइफ माई स्टोरी, तो आई विल टेल यू कि मैंने हेडक्वार्टर की आईसीसी हेडक्वार्टर की जॉब छोड़ के अपना राइटिंग करियर परस्यू करने की सोची। इट वॉज अ वेरी बोल्ड कॉल, ट्रस्ट मी। आप अगर एक नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएट है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, आपने एमबीए ड्रॉप कर दी है एंड जस्ट आउट ऑफ नो वेयर आपको किसी भी तरह से जो है एक पोजीशन मिली हुई है हेडक्वार्टर में, बैंकिंग हेडक्वार्टर में, और आप उसे छोड़ रहे हो। क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि अगर आपने जॉब करी होती है, जॉब का परफॉर्म आपको सबको पता होगा, इफ वी वर्क डाउन द लाइन 5 or 6 ईयर तो वी एंड एट अ गुड प्लेस, राइट? तो उसको बोल्ड, वो एक बोल्ड कॉल मेरे लिए बहुत था। दूसरी बोल्ड कॉल सबसे जो जरूरी चीज थी मेरे लिए, जब मैंने स्टार्ट करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन लिटेरिया इनसाइट, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गया में बैठा हूं। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि सर जब तक दिल्ली मुंबई पुणे बैंगलोर हैदराबाद अगर आप ऑफिस नहीं सेटअप करते हो तो आप अपना बिजनेस नहीं चला पाओगे। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे सर्विसेज में दम है, मेरे अंदर दम है, मेरी टीम में दम है, तो मैं इसी जगह से अपना धंधा बनाऊंगा, अपना बिजनेस बनाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, if you will today talk about the Literia inside, we are one of the few PRs into the literature जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैगजीन की बात पे आते हैं, मैगजीन पे आते हैं, द लिटरेरी मिरर पे जब हमने शुरू करा, आप उठा के अभी भी देख लो, शायद गिन के 5 एडिशन नहीं मिलेंगे पूरे इंडिया में जिन्होंने अपने ऑथर को फ्रंट कवर दिया हो, अपने ऑथर को फ्रंट कवर पे एड ऑन किया हो। क्योंकि हमें ये लगता था कि नहीं उस पर तो कोई सेलिब्रिटी आएगा ना जो बुकर प्राइज जीत चुका है या नोबेल प्राइज जीत चुका है या पुलित्जर प्राइज जीत चुका है, तो आपको अपने बोल्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। हाँ, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, शायद ये अगर ट्रिक नहीं चलती, ये टैक्टिक नहीं चलती तो इट कुड हैव बैकफायर्ड। लेकिन आपको हिम्मत उठानी पड़ेगी, आपको हिम्मत लेनी पड़ेगी कि मैंने जैसे अभी आईएम से है, आप जब पास आउट करने वाले होंगे, प्लेसमेंट एजेंसी आएगी, तो हो सकता है आपके बहुत अच्छे पैकेजेज होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेज होंगे कंसिडरिंग द नॉर्मल कॉलेजेज। लेकिन उसमें से कोई बच्चा होगा आप में से जो कहेगा नहीं मैं पैकेज को लात मारता हूं और मैं अपना बिजनेस बनाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। एक टर्म होता है ना, फ्रॉम स्क्रैच आई विल मेक माई बिजनेस। हो सकता है उस टाइम बाकी बच्चों से बेवकूफ कहे, उसके घर वाले तक बेवकूफ कहे, उसके रिश्तेदार बेवकूफ कहे, बट उसे अपने हुनर पे, अपने टीम पे, जो उसने टीम माइंड में बनाई होगी कि नहीं यार इसके साथ मैं काम करूंगा, ये लोग मेरे साथ होंगे, ऐसे काम करूंगा, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी एक्शन, अपने प्लान पे उसे भरोसा होगा, और डाउन द लाइन 10 साल बाद हो सकता है कि वो एक अच्छा बिजनेस बना के बैठा हो एंड ही वुड बी गिविंग अ लाइफ लेसन कि हाँ यार मैंने ये सोचा था, आई में था, आई कुड हैव। और दूसरी एक बड़ी जरूरी चीज, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा दोस्तों, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। क्योंकि कंफर्ट जोन हमें निकलने नहीं देता, हमें कहता है कि नहीं भाई जिंदगी आराम से चल रही है, चलने दो, क्या दिक्कत आ रही है। मेरे लिए बहुत आसान होता, मैं किसी भी इंडिया के सिटी में किसी भी बैंकिंग में या किसी कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी जॉब पे, बहुत अच्छी जगह पे सेटल होता। लेकिन मैंने एट द एज ऑफ 25-24 जहां पे लोग सेटल होने की सोचते हैं, मैंने कहा नहीं मैं स्क्रैच से शुरू करूंगा। तो वो हिम्मत होनी चाहिए अपने, वो करेज होनी चाहिए। और जब करे कहते हैं ना हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, तो मैंने हमेशा एक सुप्रीम पावर होती है, जैसा एक मैं लाइन हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कहता हूँ माता रानी का आशीर्वाद होना चाहिए। तो एक आशीर्वाद होता है भगवान का, सुप्रीम पावर का, और जब आप अच्छा करते हो तो द डॉट स्टार्ट टू